नमस्कार भाई एवं बहनों। आज मैं आपको कोर्ट की ऑर्डर या डिक्री की तामील कैसे की जाती है, इसके लिए आपको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कैसे बनाना है, इसके बारे में सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूं। जबकि मैं कोर्ट का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूं और डिक्री एग्जीक्यूशन के रजिस्ट्रार कोर्ट का, यह मेरा निजी अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, यह मेरी आपको रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जान लेते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन का मतलब क्या है। रूल 2E ऑफ सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के तहत एग्जीक्यूशन पिटिशन का मतलब आपकी कोर्ट में दाखिल करने वाली पिटिशन यह है। रूल 2F ऑफ सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के तहत एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन का मतलब कि आपकी कोर्ट में दाखिल करने वाली एप्लीकेशन है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यह एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आपको सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 21 के रूल 10 में ओरल एप्लीकेशन या रूल 11 में रिटन एप्लीकेशन करना होता है। आपके केस में अगर मनी पेमेंट की डिक्री है तो ऑर्डर 21 रूल 10 के तहत ओरल एप्लीकेशन आप प्रोसीज के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आपको अन्य डिक्री के लिए ऑर्डर 21 रूल 11 के तहत प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अपेंडिक्स ई फॉर्मेट में रिटन एप्लीकेशन करना होता है। आपको ऑर्डर 21 के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चले हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। Every application under Order 21 Rule 11 for the execution of a decree shall be in writing, signed and verified by the applicant or by some other person proved by affidavit and shall contain in a tabular form the following particulars, namely: A. The number of the suit. B. The names of the parties. C. The date of the decree. D. Whether any appeal has been preferred. E. Whether any payment made. F. Whether any previous applications made. G. The amount with interest. H. The amount of the costs. I. The name of the person against whom execution of the decree is sought, and J. The mode in which the assistance of the court is required, whether J. I. By fee delivery of any property specifically decreed. J. 2. By the attachment, or by the attachment and sale, or by the sale without attachment, of any property. 12. Where an application is made for the attachment of any movable property belonging to a judgment debtor but not in his possession, the decree holder shall annex to the application an inventory of the property. 13. Where an application is made for the attachment of any immovable property belonging to a judgment debtor, it shall contain at the foot: A. A description of such property. B. A specification of the judgment debtor's share or interest in such property. J. 3. By the arrest and detention in prison of any person. Women are exempted from arrest in execution of money decree under Section 56 of CPC. Certain class of persons are exempted from arrest under Section Sec. 55(2) of CPC. If the decree is for not more than 2,000 rupees, arrest cannot be ordered. Rule 11. Where an application is made for the arrest and detention in prison of the judgment debtor, it shall be accompanied by an affidavit stating the grounds on which arrest is applied for. J. 4. By the appointment of a receiver. J. V. Otherwise, as the nature of the relief granted may require. अब हम समझते हैं कि अगर जजमेंट डेप्टर आपके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहने के लिए या नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए चला गया है, तो आप दूसरे कोर्ट में आपकी डिक्री भेज सकते हो। इसे ट्रांसफर डिक्री कहते हैं। तो चले हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। ऑर्डर 21 रूल 6. Procedure where court desires that its own decree shall be executed by another court. The court sending a decree for execution shall send: A. A copy of the decree. B. A certificate setting forth that satisfaction of the decree has not been obtained. C. Order that no such order has been made. अब हम समझते हैं कि जिस कोर्ट में आपने डिक्री भेजी है उस कोर्ट के क्या पावर्स है। तो चले हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। ऑर्डर 21 रूल 8.
The court to whose jurisdiction the subject matter of the decree is transferred acquires inherent jurisdiction over the same by reason of transfer, and if it entertains the application with reference thereto, it would be proper exercise of its jurisdiction. It shall decide the issue under Section 47 of CPC within 6 months as per Supreme Court Guidelines in Civil Appeal No. 6375 of 2023, Pradeep Mehra vs. Harijivan J. Jetwa. Order 21 Rule 7. Court receiving copies of decree, etc., to file same without proof. S.24 Pecuniary jurisdiction. S.39 Territory jurisdiction. Hamir Singh v. Bhavani Shankar, AIR 1980 Raj 134. Article 136 of the First Schedule of the Indian Limitation Act, 1908 within 3 years subject to maximum 12 years. जिस कोर्ट में आपने डिक्री भेजी है, उस कोर्ट से कौन सी नोटिसेस निकलती है? हम इसे इंग्लिश में समझते हैं. Notice to other decree holders in case application is made by one of several decree holders Order 21, Rule 15. Notice to other decree holder in case application is made by transferor of decree holders Order 21, Rule 15. Notice to JDGM debtor in case application is made by decree holders after 2 years of decree under Order 21, Rule 22. Notice to the garnishee and obstructionist. जिस कोर्ट में आपने डिक्री भेजी है, उस कोर्ट में कौन-कौन सी गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान दिया जाता है, हम इसे इंग्लिश में समझते हैं. Principles of res judicata US 11 of CPC are applicable. SC in Barkat Ali Anr versus Badrinare, D. by LRS 2008, 4, SCC 615. Section 45 of the Code deals with execution of decrees outside India. The executing court cannot go beyond the decree is the settled principle of law which flows from Section 38 of Code. Hajra v. Abdul Majid Matu, AIR 1986 Jul K 84, 1986 Kash LJ 376. A third party cannot file a petition to stay the execution UO 21A.26. 2009, 1, Alt 846. No caveat petition USEC 148 AC.P.C is maintainable. Eknath Kiva Akhtakar Others vs. Administrative, AIR 1984 Bomb. 114. अब हम समझते हैं कि जिस कोर्ट में आपने डिक्री भेजी है, उस कोर्ट के क्या पावर्स है. तो चले हम इसे इंग्लिश में समझते हैं. Section 51 CPC, Powers of Court to enforce execution, order execution of the decree. A. By delivery of any property specifically decreed. B. By attachment and sale or by the sale without attachment of any property. C. By arrest and detention in civil prison, for such period not exceeding the period specified in Section 58. D. By appointing a receiver, or E. In such other manner. Sections 36 to 74, Sections 144, 146, 148 Code of Civil Procedure and Order 21 needs to be complied. Kindly view my other videos on this topic. Thank you very much for subscribing.